Unsupervised machine learning. Third. Unsupervised machine learning. Third. Reinforcement. Reinforcement learning. Learning. Then talking about this supervised machine learning will be classified into Two types. two types. First one is Regression. regression. Second one is Classification. classification. Yeah. In regression, what the thing going to be work out? Prediction. Linear regression, multiple prediction and recommendation. Prediction and recommendation, which is carried out by which algorithms? Linear. Linear Regression. Then Multiple linear. linear regression. Then polynomial regression. Simple linear regression. Regression tree. These are the algorithms that we can work out in what? We can work out in regression technique. Regression. What the next story we have to do? What the next story we have to execute? We just talk about the execution of next thing. That is, we just comes to know about what the thing we have to do into the unsupervised machine learning. So what is given in unsupervised machine learning? Which data? Deals with unlabeled data. Label data. Yes. ना? Unsupervised में unlabeled data. And in supervised there will be label data. Label data and unlabeled data. Two types of data are there. So unlabeled data we have to pass in unsupervised machine learning because we don't know what the input we are given and what the output we are getting. Am I clear? Okay. So that the thing we just work out. So then we came across the working of what? Unsupervised machine learning, and in unsupervised machine learning there again will be classified into two types. First is Clustering and association. क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन. दो चीजें होती है, एक होता है क्लस्टरिंग और सेकंड होता है एसोसिएशन. क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन. सो व्हाट द थिंग वी आर वर्क आउट इन क्लस्टरिंग में क्या होता है? Kind of in one cluster. Yes, यानी making the bunch of similarities. That is nothing but a clustering. Yesterday I told you, right? And association means what? Just relating the one data to the other. Called as what? Association. एक को अगर आपको दूसरे के साथ correlate करना है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे association. Am I clear? Two ways are there. One is the clustering and second one is the association. So clustering में वो bunch बनाएगा, association में A tends to B, B tends to C, C tends to D. It means that milk tends to bread, bread tends to somewhat chocolate. Okay, milk always not tends to bread. It tends to biscuit as well. So determining the patterns is nothing but what? Determining the pattern is nothing but what? Association, which are used laterally for the prediction, is called as what? Association. Am I clear? Now, yes or no? And if we talk about the algorithms, मैंने algorithm की list नहीं बताई थी शायद yesterday, right ना? Algorithms in this. Okay, so see, first algorithm is k-mean algorithm. Okay, which algorithm? KNN algorithm. First one is KNN algorithm. Second, k-mean algorithm. Okay, पहला जो algorithm है वो है KNN algorithm. दूसरा जो algorithm है वो है k-mean algorithm. Apart from that, there are the many more things. Many more algorithms are there. Let me recall. Clustering. KNN algorithm. KNN stands for कॉलेज मध्ये झाला असेल ना? नाही. KNN stands for K nearest neighbor. Okay ना? KNN stands for K nearest neighbor. That is comes under what? That is comes under unsupervised machine learning. K-mean algorithm means what? It's come under the clustering. Okay, ये जो algorithm आता है ये clustering के अंदर आता है. It is going to be determine which type of clusters we have to make. Okay,
Then hierarchical clustering. This is again a clustering algorithm. Hierarchical clustering. Okay, this is one hierarchical clustering. उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिटिक्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट COMPONENT एनालिसिस. Then one more is there, a priori a priori algorithm. Okay, this is also the getting to be worked out. Then single value decomposition is also the one of the algorithm which is going to work out in unsupervised machine learning. Single value decomposition. So these are the most probably used algorithms which are used in unsupervised machine learning. इनका इस algorithm का execution flow ये है कि these algorithms are going to be work out with unlabel of data. Okay, these algorithms will work out with what? Unlabeled data. KNN algorithm, no need of the label data. Your K-mean algorithm also not required the label data. Hierarchical clustering not required the label data. Principal component analysis not required the label data. A priori algorithm not required the label data. And single value decomposition also not required the label data. Okay, this all will be work on in the form of clustering and association. Input क्या है वो नहीं पता, output देना है तो input क्या है वो नहीं पता, but it will help to classify or it will just make the bunch of similar kind of elements. That is comes under the clustering और pattern और checking करेगा when it just going to be deal with this all. Am I clear? Clear everyone? Yes or no guys? ध्यान में आ रहा है? Okay ना? So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. That's the way we can work. That's the way we can execute. Now done? Shall we proceed? आगे बढ़े? Yes or no? हॅलो सर. हाँ yes yes. सर या अल्गोरिथम्स मध्ये क्लस्टरिंग कोण परफॉर्म करते आणि असोसिएशन कोण See करते? this just a minute. हाँ your K-mean will perform clustering. हाँ KNN also perform clustering. This one clustering. This one association. Let me mark with some different color. Association, a priori is association, and this one also association. Am I clear, guys? Yes sir. Clear, na? Yes. And what is the disadvantage of unsupervised machine learning over supervised machine learning? Interrogation. What are the disadvantage of supervised machine learning? Unsupervised machine learning over supervised machine learning. What do you think? It is unlabeled. So what we can predict on that? The accuracy of the execution may be less in unsupervised machine learning. Why? Because don't know the inputs and outputs ना. Inputs and outputs Yes, के sir. बारे में पता ही नहीं है. तो accuracy obviously getting down. Am I clear? Down. And it's again very difficult to manage this type of data. So supervised machine learning is the best option to go with the more accuracy. But when you don't know about the data, in that case you don't have an option. You must have to go with your unsupervised machine. जब आपको पता ही नहीं है कि डेटा क्या है तो वो केस में आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को जाना ही है. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज मशीन लर्निंग आपको सब कुछ पता है. यू नो अबाउट व्हाट इज दिस data, what is the input and what is the output. We know about each and everything. Then we go or we must go for which learning? Supervised machine learning. Okay, supervised machine learning. Else we just go on unsupervised machine learning. Am I clear? Clear everyone? Okay, that's the way we have to deal. That's the way we have to execute when we are talking about this all. Am I clear? Clear everyone? Okay, and now let's proceed to the next thing. Let's proceed to the next thing. Aditya, क्यों मजा आता है? So see, what the next story we have to do. Listen to me now. Now we want to talk about the last type of machine learning, that is called as which? Yes, tell me. Reinforcement learning. Okay, LEARNING. Reinforcement learning. Now what is mean by reinforcement learning? A learning which is based on reward and what? Penalties. Okay, ऐसा machine learning जो rewards
और पेनल्टी पे डिपेंड होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, reinforcement learning. We call it as an what? We call it as an reinforcement learning. So what the thing we have to keep into the mind about the reinforcement learning? Reinforcement learning के बारे में हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, reinforcement learning कैसे होता है. So see, let me tell you about reinforcement learning. Suppose this is a model, okay? It train on some data sets. ये लेबल भी हो सकता है और अनलेबल भी हो सकता है. It can be label or it can be unlabeled. So if I train this model based on this data, okay, and I pass some input to this model, कुछ भी हो सकता है, input आपका weather forecasting का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. I pass some input to this model, then it will just give me some prediction. It will just give me some prediction. So if that prediction is appropriate or right, ये prediction अगर right है, accurate है, तो मैं algorithm को क्या दूंगा, reward. What I give? Reward. अब ये इसका nature कैसे होता है थोड़ा समझा देता हूँ इसी. At our childhood, our parents will give the reward as well as penalty. Right now? So no. When you are getting the good marks in your semester, you will get reward, and when you are come up and go at the home with the backlogs, you will get the penalty. So from this condition what you learn, क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर बिना बैकलॉग के घर पे जाओगे तो दैट इज गुड, और बैकलॉग के साथ अगर घर पे जाओगे तो दैट इज बैड ना. इफ माई पेरेंट, मेरे पापा बीच में हर रिजल्ट आने के बाद मेरा वेट करते हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर मी एंड स्टैंडिंग ऑन द इन फ्रंट ऑफ डोर, ओके. और जैसे मैं एंट्री करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 4 सब्जेक्ट बैक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग, पेनल्टी और रिवार्ड, पेनल्टी. तो आप इससे क्या सीखते हो कि नहीं, सब्जेक्ट बैक नहीं आने चाहिए, और आए तो भी पापा के सामने बताना नहीं चाहिए. सो यू टेक अ डिसीजन ना, क्योंकि ये पता है कि ये अगर मैं ये आउटपुट दूं तो मुझे इस पे क्या मिलने वाली है, पेनल्टी. क्यों, पहली बार जब क्या हुआ था ये आपके ध्यान में रहता है. पहली बार जब आप 4 सब्जेक्ट लेके गए, वो टाइम पे आपको पता नहीं था रिवार्ड मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी, बट यू जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ देम, देन यू नो वी गॉट द पेनल्टी. तो नेक्स्ट टाइम आप इसी चीज को रिपीट करोगे क्या, नहीं. व्हाट इट मीन्स, हाउ मशीन विल लर्न, मशीन विल गिव सम आउटपुट फर्स्ट टाइम, इफ दैट इज ओके आई विल से या इट्स राइट, ओके. सो इट विल गेट व्हाट, reward. Getting my point? It will keep in that thing into the mind. यार मेरे मालिक ने मुझे शाबाशी दी थी जब मैंने ये आंसर उसे दिया, राइट ना, ओके. बट अगर मैं बोलूँ कि नहीं दिस इज रॉन्ग, तो व्हाट इट गेस कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि मालिक ने मुझे इसे रिवार्ड नहीं दिया था, इसने पेनल्टी दी. Am I clear? Yes or no? So that is the difference between the reward and penalty. Am I clear? That is the difference between what? Reward and penalty. So how reinforcement model will learn? जो भी आपने reward दिया वो given back to training model, okay, it just given back to training model. और अगर आपने penalty दी वो भी वो given back to training model, and next time when it will give a prediction, it will not give you that output, or it will not mark that one as output. So that is an importance of reinforcement learning. It is mostly used in real-time application when they want to analyze the decision taken by certain machines. जैसे मैं इसे robotics में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि robotics is a real machine which will work on human things ना. रोबोट ने मुझे पानी ला के दिया, I appreciate यार, गुड, ओके. पानी तो दिया और एक कान के नीचे भी लगा दी, तो राइट ना, so you give the penalty ना. So then in that case next time वो सिर्फ वाटर ही आपको डिलीवर करेगा, not other things will deliver, because he got the penalty. Am I clear? And think कि do या नहीं do. Getting my point? So it will just give the like to be a human behavior. So most probability used in the development of robotics, where we just want the real time experience of the machines. Reinforcement learning वहीं पे यूज होता है
and there are the numerous things like model, agents, and numbers of things are there. Most probably people are not going for reinforcement kind of learning. Am I clear? Okay, people will go for the just supervised machine learning or unsupervised machine learning. They will not go on to this execution. Am I clear? Yes. All of you? Okay, so note it down fast. Reinforcement learning will work out onto the robotics. It will use for it will work on rewards and penalty. Whatever the output given by the prediction model, it will filter out. If it is found to be okay, then the reward is given. If it is found to be blocked, the this penalty will given. Clear? So done. Done, guys. Is it done? हो गया है? Shall we proceed? No, sir. Wait, sir. Yeah. Done, sir. चलो डन. Yes, sir. Wait, sir. Wait, sir. Okay. Chalo done. Chalo, let's proceed to the next entity. Listen to me, guys. Is it done now? Shall we proceed? आगे बढ़े? Yes. Yeah, chalo. Now let's move toward the important phase. Now we are moving toward the execution of machine learning. Okay. If I want to implement, अब बहुत सुना होगा आप लोगों ने machine learning, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि machine learning जैसे easy सब्जेक्ट कोई नहीं है. Really, if you are taken an experience of it proper, because when I was approached first time to the machine learning, I also get machine learning पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा. But when I was enter into that, I comes to know कि it's very easy. इसमें सबसे important step जो होती है that is working with the data. So what are the life cycle of machine learning and what the life cycle it will work out. तो सबसे पहली चीज होती है the first step we have to work out, that is a gathering of data. Okay, we have to gather the things that is called as gathering of data. First of all we have to gather the data. Okay, then we have to go for the next step. Step 1 is gathering of data. Step 2, data preparation. 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 First I am explaining you
लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग, लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। मुझे अगर कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है ML के, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। अल्गोरिदम कोई भी हो, डजंट मैटर, स्टेप्स आर कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to do data gathering. Second thing, you have to do data preparation. What you have to do? Data preparation. Third, we have to do data wrangling. WRAGLING. Data wrangling. Okay. First step, we have to do gathering of data. Second step, data preparation. Third step, data wrangling. Fourth step, data analytics. Data analytics. Okay, data analytics. First, second, third, fourth. First is, बोलिए एक बार, gathering of data. Second, data preparation. Third, Data wrangling. Fourth, data analytics. analysis. Data analysis. Analytics. Fourth, fifth, Analytics. data analysis. Data analytics you can say. Data analysis also you can say. Okay. Then we have to train the model. Train model. क्या करेंगे हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे. We just want to train the model here. Okay. Train the model. Then test the model. Test the model. And last phase is what? Deployment. Test model, and last phase is deployment. First is what? Gathering of data. Second is what? Data preparation. Third is what? Data wrangling. Fourth is what? Data analytics. Data analytics. Okay. And fifth is what? Train model. Train model. Sixth is what? Test model. Test model. And last is what? Deployment. Deployment. Okay. सर हे SDLC सारखं आहे का? It's not like that of the SDLC. You can say like that, SDLC, yeah, similar to that of SDLC, but in SDLC the steps are totally two different. Okay. पहला phase जो है वो है gathering of data. Second है data preparation. Third है data wrangling. Fourth है data analytics. Fifth है train model. Next test model. And this one deployment. Okay, what are the steps involved? Data gathering, data preparation, data wrangling, data analytics, train the model, test the model, and deploy the project. These are the steps getting to be worked out in what? These are the steps getting to be worked out in machine learning. If you want to start with this, what the thing we have to do, what the thing we have to execute, we just have to go for its execution. We just have to follow these all steps. Am I clear? Clear everyone? Okay, just note it down fast. Then I will go in a depth कि data gathering क्या होता है, what the points we are going to be covered in that. Data preparation क्या होता है, data wrangling क्या होता है, data analytics क्या होता है, train model क्या होता है, test model क्या होता है और deployment क्या होता है. Am I clear? Just note it down fast and let me know once it is done. Do it fast. Now I want to talk about only the first phase and what are the different resources are available for that. Let me tell you. So gathering of data means what? Collecting
data gathering. So what it includes? Collecting the data from different resources like collecting the data from the different resources like databases, okay, or files or websites, okay, is nothing but a data gathering. Okay, what are the things we will talk about data gathering? Collecting the data from the different resources like database, okay, like websites or like other files and files, okay. तो बेसिकली ये चीज़ों से डेटा बेस वर्कआउट डेटा हम लोग को गैदरिंग करना पड़ता है. सो व्हाट इट इंक्लूड? फर्स्ट आइडेंटिफाइंग डिफरेंट रिसोर्सेस. इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं. सेकेंड, वंस वी आर आइडेंटिफाइड विद द डिफरेंट रिसोर्सेज, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. वी जस्ट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दैट एंड इंटीग्रेट दैट डेटा इन अ कॉमन फॉर्म. Am I clear? Sometime what is the thing getting to be worked out? Sometimes you will not get the data from one resource. कभी कभी आपको एक ही रिसोर्स से डेटा नहीं मिलेगा. Getting my point? You have to identify the resource कि हम लोगों को कहाँ से डेटा मिलेगा and integrate that one. Second में मैं क्या करूँगा? Collect the data. Okay. And third में integrate the data in common form from different resources. Okay, data की एक common file बनेगी which is taken from the different resources. Okay, is it done? Yes, sir. Done, sir. Done, everyone? Got it? Yes, sir. Okay ना. Now what the next story we have to do? What the next story we have to execute? थोड़ा ध्यान दीजिए. We talk about what? The integration of the data. Data integrate and will be formed. The next step is here. How we are gathering the data? See, there are the different kinds of data sources. There are the different kinds of websites which are providing the data in the form of data set. Data set means what? Only a Excel sheet. Okay, you might be heard about the word, a big word. बहुत बार पूछा जाता है मशीन लर्निंग में, कौन सा डेटा सेट यूज किया. ओके, विच डेटा सेट यू आर यूज फॉर ट्रेनिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड फ्रॉम वेयर यू आर गेट दिस डेटा सेट. ये भी हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को डेटा सेट कहाँ से मिलेगा, डेटा सेट दिखते कैसा है और डेटा सेट वर्कआउट कैसे होता है. एम आई क्लियर? सो व्हाट द टर्मिनोलॉजी वी हैव टू टॉक अबाउट अ डेटा सेट. In data set we just want to work out for the different execution, like what a source of information which is present in what Excel form. Okay, it might be a DB file, database की फाइल भी हो सकती है. It might be a file of notepad, a file of CSV, comma separated values, and many more are there that will be taken as an input. Even though some live data will be also taken from the website by using what? Web crawling. The web crawling क्या होता है पता है? सुना है? Mining the data from HTML page called as web crawling. Mining the data from HTML page called as what? Web crawling. Okay, mining the data from HTML page is called as what? Web crawling. Am I clear? Got it, na? Okay, so that is the come under the what? Data sets or gathering of data. Once we are gathered this all data, जैसे आप लोगों ने इस डेटा को कलेक्ट किया, नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप. दैट इज नेक्स्ट स्टेप इज इन लाइफ साइकिल. पलटा पेजेस. डू वन थिंग,
don't write down when I am explaining the concept. असा प्रॉब्लेम होता. Every time book is not with you ना. In future someone asks you, tell me what is mean by what are the steps involved in life cycle. So you are not going to recall yourself. You are going to be recall the book. Am I clear? Okay. First step is in machine learning. Gathering of data. Second step. Gathering the data. Data preparation. Preparation. Third. Wrangling of data. Wrangling of data. Right. Fourth. Data analytics. Data analytics. Fifth. Train model. Train model. Sixth. Test model. Deployment. Then deployment. So here we just gather the data. Now what is there in data preparation? Next step we have to work out for what? Data preparation. Okay, what we have to do? Data preparation. What the thing we have to work out in data preparation? What the entity we have to execute in data preparation? क्या करना होता है data preparation? What the thing we have to do in a data preparation? What the entity we have to go for the data preparation? So here to go for this one, what is the way we can execute? What is the way we can work out? Data preparation means what? Data preparation means what? Just collecting the data and identifying the value of the data. Identifying the value of data. Value of data is called as data preparation. Means what? आप जो डेटा ले रहे हो उसका नेचर क्या है. ओके, आइडेंटिफाइंग नेचर ऑफ डेटा. नेचर ऑफ डेटा. अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि डेटा को भी नेचर होता है. सो यस, डेटा को भी नेचर होता है. एज ह्यूमन बीइंग हैव अ नेचर, डेटा आल्सो हैव अ नेचर. सी फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गेटिंग वन डेटा सेट और सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें एक कॉलम में सेम वैल्यू रिपीटेड आपको मिल रही है, तो उसका नेचर क्या बोलेंगे आप? इट कंटेन द मोर रिपीटेड वैल्यूज. ऐसा नो? यस सर. कोई डेटा सेट आपने लिया है, कोई इन्फॉर्मेशन ली हुई है जिसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी ह्यूमिडिटी है, बॉडी का वेट है, बॉडी का हाइट है और उसकी BMI वैल्यू है. इन सम केसेस दैट BMI column value contain the same value or that are missing. So what it says? What is the prediction about the nature of data? Sir, some values are there, some are not. So what I have to do? Missing attendance from the attendance book also. Getting my point? It's called as what? Data preparation. Identifying the nature of data. Sometimes you are getting like that, even number. Sometimes you are getting like odd number. Then we need to identify only even outputs it will give us. Only odd output it will give us. So that is nothing but what? Data preparation. It includes two things. एक किसको बोलते हैं? डेटा एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन. अब एक्सप्लोरेशन में क्या होता है? वही चीजों को आइडेंटिफाई करना. और दूसरा होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग. ओके, डेटा प्री प्रोसेसिंग जो कि ब्रैगलिंग में ही आता है. So in data pre-processing, we are just going to be work out with the different steps of the data. Data को कैसे organize करना है, कौन से column लेने हैं, कौन से छोड़ने हैं, that all things, dependent variable क्या है, independent variable क्या है, that every entity we have to work out in what? We have to work out for its execution. Am I clear, guys? Yes or no? Yes sir. Clear, na? Yes sir. So note it down. About what? Data preparation. Let me know once this is done. Chalo, done. Shall I proceed? Next step is
data wrangling. Okay, next is what? Data wrangling. So what the thing we have to work out? What the thing we have to execute? Huh? What is there in data wrangling? Now listen to me carefully. Huh? Data wrangling की बात कर रहा हूँ. What is there in data wrangling? Data wrangling. So what the thing we have to work out in a data wrangling? Data wrangling में क्या आता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे वर्कआउट करता है? What the entity we have to do in a data wrangling? So see, data wrangling means what? How it is going to be deal? How it is going to be worked out? Data wrangling means what? Determining missing values. Okay, first point. Then second thing, repeated values, and third is incorrect data. Called as what? Data wrangling. Called as what? Data wrangling. So see, what the thing we have to do? What the thing we have to execute? Here we talk about what? Data wrangling, and what it includes? First, determining missing values. जैसे मैंने बोला आपको, जो null record है उसे निकालना और उसे change करना by some values. This is also called as what? Data pre-processing. And this is an important step in machine learning. आपके मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी डिपेंड होती है डेटा पे. हाउ मच करेक्ट डेटा यू आर गोइंग टू बी पास, दैट इज इंपॉर्टेंट. जो जितना आपका डेटा क्लीन होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा. गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउ वी हैव टू ट्रांसफर द डेटा शुड नॉट कंटेन सम मिसिंग रिकॉर्ड. पॉइंट नंबर 1, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए. रिपीटेड वैल्यूज भी बहुत कम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए. Third, incorrect data. Suppose I am taking the column of age and there will be written 200, 300, 400. Is it a correct? No, na. Age 200-300 साल age होता है क्या? If we are talking about human being, no, na. So that is called as what? Incorrect data. तो उसे handle करना. What we are doing in data wrangling, हम लोग missing value treatment करते हैं. मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करते हैं. मिसिंग वैल्यूज को निकाला जाता है और उसे रिप्लेस किया जाता है बाय मीन, मोड, मीडियन और सम व्हाट विद सम रैंडम वैल्यूज कॉल्ड इज एज व्हाट? मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट. उसे ट्रीट करना, इसे डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं. आपके डेटा सेट पे अगर कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग है, नल है, तो उसे वर्कआउट करना विल बी कम्स अंडर व्हाट? मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट. रिपीटेड वैल्यू मींस व्हाट? इफ यू आर गेटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम रिकॉर्ड ना, प्रेडिक्शन पर सेम ही ना, ऐसा नो? प्रेडिक्शन भी सेम ही आएगा. तो अगर आपको प्रेडिक्शन सेम मिलता है तो अगेन इट इज रॉन्ग. एंड सम, एज आई टोल्ड यू, द इनकरेक्ट डेटा. व्हाट इज मीन बाय इनकरेक्ट डेटा? दैट व्हाट? Incorrect data means what? If you are getting the irrelevant value, if I ask, suppose the rate of petrol in liter, and there will be the rate is given in what? Some other measurement, then is it right? We want in liter, na? We have to convert it into the liter, so we have to change that data as well. Yes or no? So that will come under what? Just data wrangling or data pre-processing. तो एक चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अगर डेटा wrangling करना है, आप लोगों को डेटा एग्जीक्यूशन करना है, तो आपको कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप लोग सबसे पहले क्लीन डेटा पास करोगे. आपका डेटा जितना क्लीन उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा. ओके, एक्यूरेसी विल बी मोर if the data is proper. Am I clear? Okay na? Note it down fast.
prediction. We are not finding the any value. We are just predicting. Mean median mode फक्त याला रिप्लेस करायला यूज होतो. जे सगळे रेकॉर्ड दिले ना त्याचा मी मीन काढेल आणि तो पुट करेल मिसिंग व्हॅल्यूच्या जागी. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? Is it done? Yes, sir. Next, now what we have to do? So what is the thing getting to be worked out? We just want to know data pre-processing, data wrangling, data analysis. Yes. Now what the thing we have to do in a data analysis? What are the steps involved into the data analysis? What is in data analysis? See, in data analysis, first identify dependent and independent variable. ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही होता है कि आपको प्रेडिक्ट क्या करना है. व्हाट यू वांट टू प्रेडिक्ट एंड व्हाट ऑन व्हाट पैरामीटर यू वांट टू प्रेडिक्ट, दैट यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट. I want to predict what? Whether there will be the rain or not. But depend on what? Temperature, humidity, wind speed. So जिसके ऊपर आपको प्रेडिक्ट करना है, जो डेटा लेके आपको प्रेडिक्ट करना है, that is called as independent variable. What we call? Independent variable. और जिसको प्रेडिक्ट करना है, that is called as what? Dependent variable. Am I clear? एक होता है क्या? Independent variable. जिसके भरोसे प्रेडिक्ट करना है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको प्रेडिक्ट करना है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. एम आई क्लियर? फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डिटरमाइन द सेल ऑफ कार ऑफ टाटा मोटर्स. ओके, सपोज आई वांट टू डिटरमाइन टाटा की कोई भी कार एक है जिसका लेट्स सो टियागो इज अ कार नेम. सो आई वांट टू डिटरमाइन कि टियागो का सेल इस साल कितना होगा, डिपेंड ऑन व्हाट? प्रीवियस सम ईयर्स ऑफ एग्जांपल और एक्सपीरियंस. तो उसका मुझे प्रेडिक्शन किसका देना है? सेल का. बट डिपेंड ऑन व्हाट? सिटी कौन सी है, पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, आज तक कितने कारें बेची गई, कौन से महीने में ज़्यादा कारें बेची गई, डिपेंड ऑन दिस डेटा. सो दैट इज व्हाट, वो जो अदर डेटा है उसे मैं बोलूँगा मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो मुझे प्रेडिक्ट करना है सेल इज नथिंग बट माई व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल. एम आई क्लियर? ओके गाइस, क्लियर? Yes, So sir. no, and that data, dependent or independent variable will pass to train a ML model. मशीन लर्निंग का मॉडल नेक्स्ट स्टेप जो है ना अपनी, हम लोग को उसमें ट्रेन करना है ना, तो वी आर जस्ट परफॉर्म द ट्रेनिंग ऑफ दैट मॉडल. ट्रेनिंग मीन्स व्हाट? वो जो डेटा है जस्ट पास द डेटा टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. ओके, ML एल्गोरिथम को डेटा पास करना और उसे प्रॉपरली फिट करना into the ML model is nothing but what? Train the model. And then I want to test the model. Test means what? What is a simple thing? Test model. Simple example बताता हूँ. आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. तो अगर मैंने आपको 6 क्वेश्चन बोले और मैं बोलता हूँ कि इसी में से कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो मैंने तो आपको क्वेश्चन बता दिए, आंसर भी बता दिए. अब जब आपको कोई और आके उसी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, 6 में से 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीनों के आंसर अगर आप राइट देते हो तो आपकी एक्यूरेसी हो गई 100%. लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन पूछे और 3 में से 2 ही क्वेश्चन आप बराबर दे रहे हैं, तो एक्यूरेसी विल गोइंग टू बी ड्रॉप. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपने बोला ना कि इसको मैंने इस टॉपिक पे ट्रेन किया है, इस 6 क्वेश्चन इसको आते तो आते ही है, इसका ये सही आंसर देगा. मैं क्या करूँगा, उसी में से चेक करूंगा कि ये सही आंसर देता है या नहीं है. तो अगर मुझे लगा कि नहीं यार इस बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर भी बढ़िया दे दिया, तो इसको अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन भी पूछूं तो भी आंसर बराबर देगा. और लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है फिर? 100%. एम आई क्लियर गाइस? व्हाट इज इन माई टेस्ट मॉडल? ऐसा नो, चेकिंग दी और टेस्टिंग द आउटपुट्स, टेस्टिंग द आउटकम्स ऑन डिफरेंट आगे प्रैक्टिकली देखने वाले हम लोग इसको
on a different inputs given called as test model. And then deployment means what? Just उसे कोई भी साइट पे पुट करना is nothing but a deployment. Putting it into the real time is called as what? Deployment. It's called as what? Deployment. Am I clear? Guys, everyone clear? Okay na? Testing outcomes on different inputs given called as test model. और फिर again training the model means what? Identifying and dependent and independent variable, and training the data will call as what? Train a model. Am I clear? Pass the data to ML algorithm. Yes. Pass the data to the ML for training. ML algorithm for training called as what? Training the model. Train a ML. Am I clear? Yes, sir. Yes. Note it down fast. Each and everything proper. Just download the software if you are not downloaded. To just use the Eclipse, or we have to just work out with Apache Tomcat. ना? अब सबसे पहिले सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचं आहे? इक्लिप्सला इन्स्टॉल करायचं आहे. अँड हाऊ वी जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट विथ द इक्लिप्स. इक्लिप्स इन्स्टॉल नाही होत, जस्ट फक्त त्याचा एक इन्स्टन्स क्रिएट होतो. एरर्स येऊ शकतात. ओके, जे सेटअप्स मी तुम्हाला शेअर केले आहेत, व्हॉट यू हॅव टू डू इन दॅट, यू हॅव टू जस्ट कलेक्ट दॅट and you have to just work out with that. Am I clear? Got it now? What did you do? Yes, sir. So here Yes, sir. today I shared the files Eclipse, Apache Tomcat, JDK7, MySQL, right? तुम्हाला काय करायचं आहे, यातला जो Eclipse आहे तो कॉपी करायचा, एखाद्या फोल्डरमध्ये ठेवायचा. क्लियर ना शिवम? अँड यू हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट दॅट वन. एक्स्ट्रॅक्ट करायचं त्याला. यू हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट दॅट वन. ओके, हाऊ वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट? in F I was just extract it. Am I clear now? What you to do? Like this, see, Eclipse. Am I clear? काय करायचं लक्षात नाही? ऋतिक, guys, everyone clear? अजित, वेदिका, तन्मय, धनश्री. Yes, sir. So what we have to do? We have to just extract things and we have to work out. अच्छा, JDK7 नव्हता का? Eclipse पण दोन्ही सेम होते. नाही रे, केपल असेल ना. JDK च्या ठिकाणी ती एक लिंक झाली. हां, ठीक आहे ना. We are already installing JDK7. Already we have it installed, right? चलो guys, done. यहाँ तक हो गया है? Yes or no? We have to start with Eclipse and integrate Apache Tomcat. We have to start with Eclipse and integrate with Apache Tomcat. Am I clear what you have to do? Is that clear? Done? ये Eclipse मिलने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है. ओके, एंड यू आर जस्ट गेटिंग हियर व्हाट? द Eclipse फोल्डर. मैं बता देता हूँ, फॉलो दिस स्टेप. Eclipse का फोल्डर ओपन करने के बाद Eclipse एंड देन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन eclipse.exe. सिंपल लॉजिक इज दैट. ये Eclipse स्टार्ट होगा. Do it. Extract the file. Go into this folder. Listen to me first. Listen. आप जब फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस फोल्डर. इसके अंदर जाना है, फिर Eclipse पे जाना है, और फिर आपको Eclipse डॉट ये जो exe फाइल है इस पर डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है. Am I clear? Yes or no? You are just getting the window like this. जो मैंने Eclipse की विंडो बोली थी वैसा आना चाहिए आप लोगों का. Do it fast. You are done.